पाकिस्तान में एनिमेशन का तस्वर बहुत कम है, लोग इस फील्ड के बारे में अभी भी नहीं जानते। मेरे आज के मेहमान शकीब फ़िरोज़ हैं जो कि एक कैरेक्टर एनिमेटर हैं। आइए उसमें कुछ बातचीत करते हैं, उनसे पता करते हैं वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकीब। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे अपने बचपन, तालीम और प्रोफेशन के बारे में बताएं। बचपन के बारे में कोई ऐसी there's not really anything extraordinary about it. I was very studious for some time. Okay. जब तक मैंने बुक्स के अलावा और कुछ डिस्कवर नहीं किया था. And when I started discovering other things, academics started somewhat, going a bit down. और हमेशा से I was into like various sorts of arts, like mainly drawing and acting. Okay. Her acting say it went to filmmaking, and with the limited circle of friends that I had, when I discovered that okay, you can make movies on a computer without requiring any cameras or any Humans. Humans exactly. So I was pretty much hooked, and I started off with the Microsoft Kids software when I was like 12 or 13. Cool. And it was called Microsoft Kids 3D Movie Maker. Okay. फिर उसके बाद I started sort of discovering some other more sophisticated applications like 3ds Max and whatnot. Okay. But I was still not sure कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है और मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. So I just went with the best thing I could come up with, the traditions of society about career. How did you end up as a 3D animator, as a character animator? Actually, I started off like after my A-levels, I decided to go for marketing, which I thought was one of my passions. Okay. And I think, इसकी वजह यही थी कि I did not know कि पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग और एनिमेशन का क्या सीन है. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. It was during my education at IBA that I started discovering about existing animators and digital artists and the digital arts ka scene in Pakistan. And there used to be a forum called CG Expanse. CG stands for computer graphics basically. Okay. So that really helped me a lot, and the people who were running that forum were some of the most experienced people in Pakistan and people who had done a lot in Pakistan and now were in UK or US or were working with Hollywood, and I got a lot of guidance from them. Okay. And इसी दौरान फिर मैं इंटरनेशनल फोरम्स को भी देख रहा था. वहाँ पर फिर मुझे पता चला कि अच्छा देयर इज़ एन ऑनलाइन स्कूल व्हिच इज़ कॉल्ड एनिमेशन मेंटर, and it was all about character animation. And because of the film thingy and the lack of actors on me, I was specifically interested in what is this character animation thing. Okay. So I looked at some of the work of the students of Animation Mentor, and I was like, okay, character animation is what I want to do. Okay. And what I have to do. How come we don't have, or we haven't made any animated movies like compared to Hollywood? उधर Pixar है, continuously हर साल आती रहती है. There are a lot of factors actually. एक तो ये कि we have to understand कि animation is pretty much their invention. Okay. Like primarily America. ज़्यादातर शुरू का जो animation की technology और animation में experimentation जो हुई है, वो USA में ही हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो Walt Disney का है. तो we should keep in mind that they have 100+ years legacy of things going on in continuity. But we can always try. Yeah, of course we can. But I'm just trying to get an idea of how things are. पाकिस्तान में हमें अभी 3D एनिमेशन में आए हुए बहुत से बहुत it's been 20 years or so. Okay. दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि given the time that they have already spent and they know what it is about, they know what it can do pretty much, they know a lot more than we do. सही है. इसी तरह से उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को जो है इसको रिकग्नाइज करते हुए उनके प्रोग्राम्स इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस्ड हैं. तो दे कीप डेवलपिंग टूल्स एंड they keep developing software tools, they keep developing different techniques. No doubt. They keep merging various arts together. Yeah. अगर देखा जाए तो animation is basically a high point and an amalgamation of all the art forms. से इसमें ड्राइंग भी आ जाती है, डिज़ाइन भी आ जाता है, फिल्म भी आ जाती है, एक्टिंग भी आ जाती है, सही है, सब कुछ आ जाता है. कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एक एनिमेटेड फिल्म की प्रोडक्शन में कोई आर्ट फॉर्म ऐसा नहीं है जो ना आता हो. तो इसी हिसाब से
उनके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, इसी वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी मिल जाती हैं, वहाँ पर फाइनेंशियर्स भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी है, पर एनिमेशन को तरजीह नहीं देते। एग्जैक्टली क्योंकि एनिमेशन के बारे में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, जो थैंकफुली स्लोली डेवलप हो रहा है, ठीक है, मगर इट विल टेक सम टाइम। एंड आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस मैटर कि पाकिस्तान में फीचर फिल्म्स एनिमेटेड क्यों नहीं बनती। तो इसमें आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव टॉक टू the people who own studios in Pakistan and who have been in the industry for quite some time, like they are pretty much the pioneers. Okay. And I have been talking to people who are Pakistanis but are currently working in Hollywood or somewhere. Okay. And most of them agree कि इसकी एक वजह क्या है कि जैसे India has also made very decent progress in 3D animation. सही। तो उनकी वजह क्या है, वो लोग एनिमेटेड मूवीज़ भी निकाल रहे हैं, रियो का हिंदी डब आ चुका है, वर्ल्ड डिज्नी जो है वो इंडियन मार्केट के लिए मूवीज़ रिलीज़ कर रहा है और इंडियन टीम्स के साथ मिलकर 3D एनिमेटेड मूवीज़ आ चुकी हैं, जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मूवी, सैफ अली खान एंड करीना कपूर, रोड साइड रोमियो, यस। ओके। तो दैट वाज अ कम्प्लीटली एनिमेटेड मूवी। तो इसकी वजह क्या है कि उनकी ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जब उनकी फिल्म इंडस्ट्री कहीं पहुंच गई है उसके बाद उन्होंने फिर उस पर एनिमेटेड मूवीज़ की लेयर लगाई। इसका एनिमेशन की एजुकेशन से कोई ताल्लुक होता है, और पाकिस्तान में कोई है ऐसी फॉर्मल एजुकेशन एनिमेशन? पाकिस्तान में फॉर्मल एजुकेशन 3D एनिमेशन की थैंकफुली कुछ टाइम से इस चीज़ पर अटेंशन आना शुरू हुई है, मगर अभी भी उस लेवल पर नहीं है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर डायरेक्शन की सॉर्ट ऑफ कमी है, विजन की सॉर्ट ऑफ कमी है। एंड यू नो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में चल रहे हैं एनिमेशन से मुताल्लिक, डिजिटल मीडिया से मुताल्लिक और मीडिया साइंसेस से मुताल्लिक, but they are also, you know, they are slowly learning from the artists and faculty members who are coming there to join them. जैसे for example, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ बहुत बड़े बड़े भी नाम हैं यहाँ पर जो है डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज करा रहे हैं, and they are big names, but they are totally focused on the tools and the software. Okay. And this is a fundamental lack of understanding that we need to cater. कि it's not about the tools, it's about the art. Whether you're capable of doing it, whether you want to do it. Exactly. Like if I have Photoshop, I'm just gonna start designing myself. But I've heard somebody say that no, you need to have an expert as well on that subject. Yeah, because देखिए Photoshop is an image editing software जिसमें पेंटिंग भी करते हैं लोग और बहुत हाई एंड लेवल पर करते हैं। अच्छा, इससे हम थोड़ा सा आगे चल के आते हैं कि पाकिस्तान में कैप्टन सेफगार्ड के अलावा कोई और सुपर हीरो मुझे तो नहीं दिखाई दिया, बैटमैन सुपरमैन की तरह। वजह कमांडर सेफगार्ड वाज द फर्स्ट कैरेक्टर जो आया था, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल कैरेक्टर, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है। टेट्रा पैक बेसिकली कमांडर सेफगार्ड की सक्सेस के बाद इट वाज लाइक के पीपल सॉर्ट ऑफ वोक अप कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, सही है। उसके बाद फिर टेट्रा पैक अपनी एक जो है वो सीरीज़ लेकर आया है मिल्कटियर के नाम से, दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सुपर हीरोज, सही है। और भी जो हैं वो आ रहे हैं, जामे शीरी का एक कमर्शियल आया था, आई डोंट नो कि इस पर वो कोई सीरीज़ बनाने का प्लान कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट दैट वाज आल्सो लुक लाइक दे आर सॉर्ट ऑफ यू नो अटेम्प्टिंग एट किड सुपर हीरोज, ठीक है। इस तरह से और भी ब्रांड्स आ रहे हैं, बट द प्रॉब्लम है इसके ब्रांड्स आ रहे हैं, उनके अपने स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग के। द आइडिया इज नॉट मेनली एंटरटेनमेंट, द आइडिया इज नॉट मेनली क्रिएटिंग अ कैरेक्टर। अब जैसे आपने बैटमैन सुपरमैन स्पाइडरमैन वगैरह की बात की, उनको अगर देखा जाए ये पूरे कैरेक्टर्स हैं, सही है, इनकी पूरी स्टोरीज हैं, दे हैव देयर यूनिवर्सेस, इनकी पूरी जिंदगियां हैं जो इनके फैंस को पता है कि बैटमैन एक्चुअली ब्रूस वेन है जिसके माँ बाप को बचपन में कत्ल कर दिया गया था, एंड ही डिसाइडेड कि आई विल फाइट क्राइम, एंड ही यू नो डॉन्ड एज अ बैट के जिस चीज़ से मैं हमेशा से डरता आया हूँ अब मैं जो है क्रिमिनल्स को उससे डराऊंगा। सो दे आर कैरेक्टर्स। कमांडर सेफगार्ड आई हैव नेवर वर्कड ऑन इट, आई डोंट नो कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। मिल्कटियर की बैकग्राउंड स्टोरी, एक्चुअली ये कैरेक्टर्स जो हैं ये सर्व कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सही है। I won't name the product or the character or the brand or anything, but in one of the series like this,
इस तरह की भी चीज़ें हो चुकी हैं कि वी केम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन जो आगे की एपिसोड से जाकर और ज़्यादा बिल्डअप हो सकती है एंड इट वुड रियली मेक अ वेरी गुड स्टोरी, बट द क्लाइंट वाज लाइक कि नहीं, हम अपने सुपर हीरोज़ को पिटता हुआ नहीं दिखाना चाहते, ये हमारे ब्रांड इमेज पर सही नहीं लगेगा एंड वी वर ऑल वेरी अपसेट अबाउट इट कि वी हैड टू लेट गो ऑफ अ वेरी गुड टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ देयर स्टोरी। बट जब ब्रांड्स की अपनी स्टेक्स होती हैं तो लिमिटेशंस आ जाती हैं, सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता होपफुली। इसके अलावा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि सुपर हीरोज़ नहीं बन रहे, देयर आर सम सीनियर आर्टिस्ट हु हैव वेरी गुड कैरेक्टर्स मेड, सही है, उनके डिज़ाइंस, उनकी स्टोरीज सब कुछ रेडी है, मगर मसला क्या है, वही कि फंडिंग का मसला है उनकी प्रोडक्शन के लिए। अभी भी देयर आर सम न्यू स्टूडियोज दैट आर कमिंग अप हु आर डूइंग सम रियली ग्रेट वर्क, दे हैव इवन स्टार्टेड वर्किंग ऑन कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स। अभी मेरी आज ही बात हो रही थी एक्चुअली, तो उस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आई वोंट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आई कांट नेम द कैरेक्टर्स और द स्टूडियोज, बट होपफुली पाकिस्तान में बहुत जल्दी हम बहुत अच्छे कैरेक्टर्स आते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपके आजकल रीसेंट प्रोजेक्ट क्या हैं? Actually, I am not affiliated with a studio anymore for the time being, and I am working as a freelancer. तो the thing is कि projects आते हैं बीच में, फिर वो भी phases आते हैं जब projects नहीं आते, queries आ रही होती हैं मगर वो for any reasons materialize नहीं हो पा रही होती, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह वही है कि जो है our clients don't understand how much cost and work is involved, सही है, and when we quote a price तो they are like this is too high, और सिर्फ एक एनिमेशन करने में इतना ख़र्चा क्यों आता है। एंड इत्तफाक कह लें या जो भी कह लें कि मैंने अभी तक जो प्रोजेक्ट्स किए हैं एज अ फ्रीलांसर, वो मैंने क्लाइंट्स के ही ऑफिसेज में उनके साथ ही बैठकर उन पर काम किया। अच्छा। तो इससे एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस जो निकला है वो ये निकला है कि पीपल हु सी एन एनिमेटर वर्किंग ऑन एनिमेशन दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इट, कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज दैट यू नीड फॉर इट, एंड देन दे रियलाइज के एक्चुअली जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा लग रही होती है इन फाइनेंशियल टर्म्स के, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द वर्क दैट दैट इज़ इन्वॉल्व्ड। सो yeah, back to your question, the projects, sorry, it's all right. I have coincidentally अभी तक मेरे जो projects रहे हैं वो ज़्यादातर financial institutions as an independent animator, financial institutions के लिए रहे हैं। जैसे for example they have some crazy idea, for example जो banking में पहले कभी जो है वो नहीं सोचा गया या नहीं try किया गया and they want to do it, but they can't put it out all the cost in the open, so they would first like to have it visualized, so yeah, and that they will sort of create a short film about a user who is using that experience, और उस user का experience कैसे रहता है, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो मैं इन projects को as visualization नहीं देखता, मैं इन projects को as short films ही देखता हूँ। सही। अच्छा शुकेब, आपका मैसेज उन यूथ, उन यंगस्टर्स के लिए जो कि एनिमेशन की तरफ आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे? From my personal experience, regardless of how impossible it looks, it will happen inshallah if you have this earnest desire. और when you look at the work of your seniors, तो दो तरह के reactions होते हैं usually. एक होता है inspiration, you get extremely inspired. Okay. और एक होता है disappointment, extreme disappointment कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, या अगर पहुँचूंगा तो मुझे 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, मुझे कितने साल लगेंगे। Actually पहुँचना कहीं नहीं है, शुरू करना है। एग्जैक्टली, शुरू करना है और बस चलते रहना है, हमेशा चलते रहना है। इसे इसी तरह से देखना है एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल हैपन, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इवन इफ दे डोंट सीम टू बी हैपनिंग राइट नाउ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फोकस ऑन आर्ट नॉट ऑन द टूल्स। बात ये नहीं है कि यार मैं 3D में जो है मैं एक बड़ा जो है ज़ोरदार किस्म की एक फिल्म बना सकूँ। द फोकस इज ऑन द फिल्म नॉट द 3D. 3D इज जस्ट अ मीडियम, इट्स जस्ट अ टूल। Thank you for being here with us, Shakaib. Thank you very much for giving me the opportunity. Wish you all the best in life. Thank you very much. Pakistani Profiles में सिर्फ इतना ही। मज़ीद प्रोफाइल्स के लिए you can log on to pakistaniprofiles.com.